Good morning, class. Today we will learn the basic definition of computer graphics and some basic terminologies of computer graphics. So let's see the basic definition of computer graphics. To plot some pixels points on a computer screen to make an image is called computer graphics. Means in our computer screen there are lots of pixels. In these pixels, some pixels are on and some pixels are off at same time instance. So by using on or off to some pixels, we plot a specific picture on our computer screen. So uh, to plot some pixels point on computer screen to make an image. So on some pixels we put a black intensity, and on some pixels we put white intensity. So by using black and white intensity on some pixels, we produce a specific image. So computer graphics is a rendering tool for creation, storage, and manipulation of pictures. Means by using computer graphics, we can create image. Okay, we can create image, and we can store image, and also we manipulate the image. We stored image in a digital form in our hard disk. I want to manipulate these images, this is also the field of computer graphics. Computer graphics has become an efficient tool for representation of information in such diverse fields as science, engineering, medical science, business art, entertainment, advertisement, education, and training, etc. बेसिकली हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो फील्ड है, कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में हम यूज करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग स्ट्रीम हो गई, मेडिकल स्ट्रीम हो गया, बिजनेस स्ट्रीम हो गया, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रीम फील्ड हो गया, एंटरटेनमेंट फील्ड हो गया, ठीक है। इन सभी फील्ड में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को एक इफिशिएंट टूल की तरह यूज करते हैं, ताकि हम अपने इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर हम एडवर्टाइजमेंट फील्ड की बात करें, तो एडवर्टाइजमेंट सेक्टर्स में आपने देखा होगा टीवी पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऐड आते हैं, और उन एड्स को बनाने के लिए हम बहुत सारे एनिमेशन टेक्निक्स का भी यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं उस एडवर्टाइजमेंट को बनाने के लिए, उस एड को बनाने के लिए हमने कहीं ना कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज किया, कंप्यूटर ग्राफिक्स से टेक्निक को यूज किया। बिजनेस प्रेजेंटेशन अगर हमें बनानी, तो कहीं ना कहीं बिजनेस प्रेजेंटेशन बनाते समय हम अपने पॉइंट को क्लाइंट को इजीली समझा सकें, इसके लिए हम अपने बिजनेस प्रेजेंटेशंस में कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ फील्ड्स which use the computer graphics, and computer graphics is nothing, it just plot some pixels to draw or to pattern a specific picture on computer screen. So there are some important applications of computer graphics. First one is computer graphics is used in the field of computer aided design. As you know, CAD. It is used to produce illustration of reports or to generate slide for with projections. The artist uses a combination of 3D modeling packages, texture mapping drawing program, and CAD software. In the field of entertainment, CG methods are now commonly used in making motion pictures, music videos, and television shows. And last one is computer generated model of physical, financial, and economic system are often used as education aids. So there are different applications of computer graphics.
And there are diverse field of computer graphics as such as engineering stream, medical stream, business, arts, entertainment, advertisement, education, etc., etc. So, but in computer graphics, if we want to learn, we want to understand the computer graphics, we want to use the computer graphics technology, we need to understand some basic terminologies which are used in computer graphics. These are, first one is refresh rate. So the refresh rate is the number of times a display image is reprinted on refreshed per second. The refresh rate is expressed in hertz. Means you see that our electricity bulb is being on off 50 times in a second. Just like in our computer screen, in our rasterized computer screen, any pattern you see on the display device, it is being reprinted. It is being reprinted again and again, approximately 40 times per second, 60 times per second, 80 times per second. The in in a second, how many times screen refreshed, that's called refresh rate. Means reprinting the same image in unit time. uh, the refresh rate is expressed in hertz, so a refresh rate of 60 means the image is refreshed 60 times in a second. The refresh rate for each display depends on the video card uses. हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स में वीडियो कार्ड्स भी यूज होते हैं, ठीक है, जिसको हम ग्राफिक कार्ड्स भी बोलते हैं. तो कहीं ना कहीं रिफ्रेश रेट जो है डिपेंड करता है कि हम जो हार्डवेयर यूज कर रहे हैं ग्राफिक्स के रिगार्डिंग, उस हार्डवेयर के क्या क्या फीचर्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा इंटरलेसिंग. On some raster scan systems, each frame is displayed in two passes using an interlaced refresh procedure. In the first pass, the beam sweeps across odd numbers line from top to bottom. Then, after the vertical retrace, the beam sweeps out remaining even numbered lines. Means, as you see here in this figure, there are two color lines, blue color and red color. Blue color lines are odd number lines and red color lines are even number lines. So in first pass means we scanned each line. So in first pass, we scanned only blue color line. We scanned only blue color line. When we reached at the right bottom corner of the screen, then we we use vertical retrace to reach the top left corner of the screen, and then after that we use second pass, that is even numbered line scanning. Means in first pass we scan blue color lines, and in second pass we scan red color lines. So in this scanning method, we we didn't scan all scan lines continuously. We scan first odd number lines. After that, we scan even number lines. So this type of scanning is called interlacing. So interlacing of the scan line is this way allow us to see entire screen display in one half of time it would have taken to sweep across all lines
at once from top to bottom. This is an effective technique for avoiding flicker, providing that adjacent scan line contains similar display information. Means आप एक तरह से ये कह सकते हैं कम समय में पिक्चर की इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करना, रिफ्लेक्ट करना, दिखाना ही क्या है, एक तरह से इंटरलेसिंग है। क्यों? जैसे सपोज करिए आपको अपनी स्क्रीन में, आपकी स्क्रीन पे सपोज करिए 1000 स्कैन लाइंस है। अब उन 1000 स्कैन लाइंस को अगर स्कैन करने में 10 माइक्रो सेकंड अगर लग रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 माइक्रो सेकंड लग रहा है, तो अगर हम इंटरलेसिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो हम 5 माइक्रो सेकंड में ही अपनी उस इमेज को स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, अगर हम इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे तो उस इमेज को स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट कराने के लिए हम टोटल 10 माइक्रो सेकंड का ही टाइम लगेगा। तो इससे क्या कम समय में हम पिक्चर की इंफॉर्मेशन को सिस्टम की स्क्रीन पे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, डिफाइन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सैम्पलिंग। Sampling, basically the output of most image sensor is an analog signal, and we cannot apply digital processing on it because we cannot store it. बेसिकली हम जो भी सिग्नल्स यूज करते हैं वो सिग्नल या तो एनालॉग सिग्नल होगी या डिजिटल सिग्नल होगी। तो बेसिकली इस सिग्नल का जो कन्वर्जन है, मींस एनालॉग सिग्नल को जब हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो ये कन्वर्जन ही बेसिकली सैम्पलिंग कहलाता है। तो अगर आप यहाँ देखें कह रहा है वी कैन नॉट स्टोर इट बिकॉज इट रिक्वायर्स इनफाइनाइट मेमोरी टू स्टोर अ सिग्नल दैट कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यू। कहने का मतलब है कि अगर आप बहुत सारी डिवाइसेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं लाइक सेंसर्स, तो जो सेंसर जो डेटा प्रोड्यूस करते हैं दीज डेटा इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स, but we can't store the analog signals. So we, if you want to store that data that produced by the sensor, we need to first convert the analog signal into digital signal. So the conversion process of analog signal to digital signal is called sampling. So look here. So we have to convert an analog signal into digital signal. The basic idea behind converting an analog signal to its digital signal is called sampling. So next is bitmap. In bitmap, you can say bitmap or pixmap. A frame buffer with 1 bit per pixel is called a bitmap. Frame buffer with 1 bit per pixel is called bitmap. Means if we talk about bitmap or pixmap, means we allowed number of bits for a single pixel in our frame buffer. So here, if we talk about bitmap, so bitmap means we allot 1 bit for each pixel. So a frame buffer with 1 bit per pixel is called a bitmap, and a frame buffer with multiple bit per pixel is called pixmap. Suppose that our display device is a black and white device. So each pixel having the intensity either white, either black. Either white means having one value. Either black means having zero value. Zero value means intensity, black intensity, and one value means white intensity. Means pixel is being on at intensity at intensity level 1, and pixel is being off at intensity level 0. So to define a pixel in black and white color, we use we need to represent this information
by using 1 bit per pixel. So a frame buffer with 1 bit per pixel is called a bitmap. So this type of uh, of pixel in which we use 1 bit to represent each pixels, that is called bitmap. And a frame buffer with multiple bit per pixel, if we allocate 3 bit per pixel, if we allocate 8 bit per pixel, so more than 1 bit per pixel is called pixmap. Like suppose that if we using RGB color monitor, color raster system, so we use 1 bit for red color, we use 1 bit for green color, and we use 1 bit for blue color. So if we make high intensity for these three colors, so for any specific pixel, so on that pixels, red intensity is one, green intensity is also one, and blue intensity is also one. So on that pixel, the color produced is the mix up of red, green, and blue. And suppose that any other pixels, if we set the intensity of red color is one, and intensity of green color is 0, and intensity of blue color is 1. So on that pixels, the generated color combination is produced by red and blue only, not by green. So there are different methods to produce the colors on pixel by using the color. So we define which color we used. For that one, we use the pixmap. Okay. Next point is frame buffer. A frame buffer is nothing, is a memory area where we define the picture information in digital form. We define the picture information in digital form. Frame buffer is a memory area where we define the picture information in 0 and 0 1 form. So you see here, picture definition is stored in memory area called the refresh buffer or frame buffer. मीन सपोज करिए कि हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन में 1028 क्रॉस 1028 पिक्सल्स हैं, रेजोल्यूशन जो है उसका 1028 क्रॉस 1028 का है। उस रेजोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फ्रेम बफर में हम मेमोरी ब्लॉक चूज करेंगे, उन वहाँ फ्रेम बफर में जो नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स होंगे वो अगर हमारे स्क्रीन में 1028 क्रॉस 1028 पिक्सल्स हैं, तो हमारे फ्रेम बफर में जो मेमोरी ब्लॉक्स होंगे वो भी 1028 क्रॉस 1028 होंगे। और हर एक मेमोरी ब्लॉक स्क्रीन की हर एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करेगा, करस्पॉन्डिंग पिक्सल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी स्क्रीन का फर्स्ट पिक्सल जो होगा वो फ्रेम बफर के फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी फ्रेम बफर के फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक में जो डेटा है, उस डेटा को यूज करेंगे हम उस पिक्सल की इंटेंसिटी वैल्यू को सेट करने के लिए। बिट प्लेन, अगर हम फ्रेम बफर में अगर हम 1 बिट पर पिक्सल यूज करते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो बिट प्लेन होगा हमारे फ्रेम बफर में वो सिंगल बिट प्लेन होगा। लेकिन अगर हम मोर देन 1 बिट पर पिक्सल यूज करते हैं, तो हमारे फ्रेम बफर में जो नंबर ऑफ बिट्स प्लेन होंगे वो उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज करेंगे। जैसे सपोज करिए हमने थ्री बिट पर पिक्सल यूज किया, तो 3 बिट पर पिक्सल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 बिट प्लेन होंगे। 3 बिट पर पिक्सल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 बिट प्लेन होंगे। तो इस तरह से बिट प्लेन का कॉन्सेप्ट हम फ्रेम बफर में यूज करते हैं। एंड दिस इज a memory segment used to control an object such as color, cursor, spread, etc. Aliasing and anti-aliasing. Aliasing and anti-aliasing is an effect of resolution.
If your screen having low resolution, by using uh, because of low resolution, the effect produced is called aliasing, and removing that effect is called anti-aliasing. Suppose that you see here, there are two lines. In one lines, in above line, you see line is some like zigzag manner. Zigzag manner means a certain portion of line is just overlapped on certain portion of other section of line. So for removing this problem, we use the concept of anti-aliasing. Okay? So by increasing the resolution of the system, we remove the aliasing factor, and the removing aliasing factor is called anti-aliasing. So these are some basic terminologies of computer graphics, and some definitions and some applications of computer graphics. Thank you.